Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second episode of In the Zone. The topic today is about regulatory design for development of technology and knowledge ecosystem. And we have with us our Director Planning, Hamza Saeed Orekzai with us. Hello Hamza, how are you? Hello, Samin. Thank you for inviting me to the session and looking forward. Ji, I'm good, Alhamdulillah. Before I start a series of questions lined up for Hamza, I have to tell the audience that he presented this amazing presentation for our internal team to educate us about STZA's regulatory framework, and it was done so well that we instantly thought that we need Hamza's time and record the session for all of you. So, Hamza, with you, I'm going to start with the first question. Since STZA has its own internal approval committee, and by approval committee, I mean final committee which accepts and rejects the applications of the license, can you tell us about how it's designed and the process, like briefly? बिल्कुल ठीक है जी. So, Samin, within the act, there is this all-powerful committee called the Approvals Committee, जिसका main function है to approve and reject applications of the zone developer and zone enterprises. So, there are two types of licenses that STZA offers. The first one is zone developer, which is the infrastructure developer of these zones, and then the zone enterprise license, which are these technology companies, R&D centers, higher education institutes, and all other players and stakeholders involved in the development of knowledge and technology ecosystems. So within our rules for qualification of zone enterprise, we have 70 technologies that are listed. It is very important as well कि जो हमारा regulatory function है वो technology को as a vertical नहीं वो treat करता. It's not as a technology, not as a vertical but as a horizontal. So for instance, in the 21st century, अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी जो है और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, so when we talk about, just let me give you an example, artificial intelligence, so it is relevant in agriculture, it is relevant in manufacturing, it is relevant in internet companies, big data, जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रेलेवेंट हो जाती है. सो वी आर लुकिंग एट टेक्नोलॉजी एज अ डिसरप्टिंग इंडस्ट्री, क्रॉस कटिंग मेनी अदर सेक्टर्स. तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव 70 लिस्टेड टेक्नोलॉजी. सो अप्रूवल कमेटी जो है वो डिज़ाइन इस तरह हुई है कि उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो एजाइल हो, और उसमें जब भी एप्लीकेशन आती है, सो वी हैव अ होल इंटरनल मैनुअल व्हिच डेलीगेट्स पावर्स ऑफ एवैल्यूएशन टू द एसटीजी कमेटी. सो फॉर इंस्टेंस, जब भी कोई कंपनी आती है तो वो हमारे वेबसाइट पे जाके जोन डेवलपर या जोन एंटरप्राइज की एप्लीकेशन सिलेक्ट करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स अपलोड करके सबमिट कर सकती है. वंस दैट इज सबमिटेड, इट लैंड्स ऑन आवर वन विंडो. विदिन 2 to 3 वर्किंग डेज वन विंडो रेफर्स इट टू एसटीजी कमेटी. एसटीजी कमेटी जो है वो हमारी अप्रूवल्स कमेटी के नीचे एवेलुएशन कमेटी है, और वो सारा उसको प्रोसेस करके वहाँ पे हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, बिजनेस एनालिस्ट, बड़े डाइवर्स किस्म के फंक्शंस के लोग जो हैं वो बैठते हैं. दे एनालाइज द एप्लीकेशन, एंड वंस वी हैव अ होल एल्गोरिथम, मैथमेटिकल फार्मूला व्हिच इज फोकस्ड ऑन कि जो एवेलुएशन हो प्रपोजल्स की वो जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक हो. वंस दैट इज डन, इट इज पुट ऑन द अप्रूवल्स कमेटी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों कमेटियां, एक कमेटी एवेलुएशन करती है और दूसरी कमेटी जो है अप्रूवल्स कमेटी वो डिसीजन लेती है. एंड फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी हैव डिवाइडेड द बोथ, ताकि सिर्फ एक कमेटी जो है वो मैनिपुलेट ना कर पाए. और हमने ये चीज इस तरह वन विंडो जो है वो कोऑर्डिनेशन करती है. सो क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन वन विंडो करती है, एवेलुएशन एसटीजी कमेटी करती है, और डिसीजन जो है वो अप्रूवल्स कमेटी करती है. सो in terms of how the governance structure is, we have ensured that there are number one, various functions and expertise involved in evaluation of application, and number two, we have kept this transparent by dividing the roles within different committees. Similarly, second जो है, it's very efficient, क्योंकि अगर हम कंपैरेटिव लॉ देखें तो हमारे क्लोजली जो जोन्स पाकिस्तान के अंदर जोन्स की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए है. सो टेक्नोलॉजी जोन्स तो आईसीटी और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करती है, बट एससीजी जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे करती है. एंड इफ यू लुक एट द गवर्नेंस स्ट्रक्चर देयर,
वहाँ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि पहले वो प्रोविंशियल लेवल पे उनकी एसटीजी अथॉरिटी है, वहाँ पे जोन डेवलपर या जोन एंटरप्राइज एप्लीकेशन डालेगा। उसके बाद वो जोन डेवलपर की एप्लीकेशन यहाँ अप्रूवल्स कमेटी में आती है जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में है। उसके बाद वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स में जाती है जो प्राइम मिनिस्टर और 4 CMs और 4 चीफ सेक्रेटरीज चेयर करते हैं, सॉरी अटेंड करते हैं। सो नॉर्मली बोर्ड ऑफ अप्रूवल जहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग होती है वो साल में एक दफा या दो दफा बैठती है। सो दैट गिव्स, ऑल्दो इट्स अ ग्रेट governance model, however, bringing these people के 4 CMs, PM, 4 CS is pretty hard and sometimes थोड़ा सा वो private sector suffer करता है. So in our law, we have tried to learn from that experience and we have tried to make it more agile. And that's why within 9 months since the act, we have already been able to issue 10 to 11 zone enterprise licenses. And they have become functional within our new state life tower special technology zone. Ordinance से act जब बना तो there were few additions like one window facility add हुआ, co-zone developer add हुआ. There was one more term, a special technology appellate tribunal. What exactly is that? It's बिल्कुल ठीक है. it's So catchy, the but जी जी what जी exactly it does? बिल्कुल ठीक है. So just to give you a bit of a context, ऑर्डिनेंस जो है वो दिसंबर 2020 में आया एंड व्हेन आई जॉइंड इन मार्च, तो जो है हम नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी में थे एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्ट्स जिसका जो है सारे पॉलिटिकल पार्टीज वोटेड इन फेवर. सो यूनानिमसली जो है हमारा ऑर्डिनेंस जो है वो अप्रूव हुआ फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड सेनेट बिकॉज दिस कंसर्न द फ्यूचर development and also concerned our youth जो कि आगे आने and technology is one of those areas which grow non-linearly. स्टैंडिंग कमेटी में बड़े सारे हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, मजेदार बात यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आई. सो अ लॉट ऑफ सेनेटर्स एंड एमएनएस प्रपोज कि जी ऑर्डिनेंस को आप ज्यादा पावरफुल करें, आप ज्यादा वो करें. तो वहां पे ये जो है आई कांट रिकॉल कि किसकी सजेशन थी बट वो ये आया कि आप स्पेशल एपेलेट ट्रिब्यूनल वन विंडो को ज्यादा स्ट्रेंथन करें सो दैट टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर डजंट फेस इश्यूज इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो स्पेशल एपेलेट ट्रिब्यूनल जो था ये कॉन्सेप्ट ग्लोबली भी फॉलो होता है. अगर आप मिडिल ईस्ट देखें, अगर आप जो है वो यूरोपियन यूनियन देखें या यूएस देखें, इवन चाइना, साउथ कोरिया, ईस्ट एशिया में भी. सो नॉर्मली व्हेन judicial system is number one either slow or number two lacks certain expertise, then special regimes come into place. So in this case as a technology हर 2-3 साल में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है और नई टेक्नोलॉजीज आती हैं. सो उस पे सो फॉर इंस्टेंस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पे या डेटा प्राइवेसी पे, दीज आर टू टेक्निकल ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर आर जुडिशियल सिस्टम. क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे फॉर इंस्टेंस ब्लॉकचेन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे लड़ाई है, so Samin, even you and I will feel very lost because that would be we need a global blockchain expert to actually tell Exactly. us कि जी किसकी गलती है, because that expertise does not exist in Pakistan. So special appellate tribunal which has been given equivalence to that of a high court is about dispute resolution of zone enterprises and zone developers. और ये सारे किस्म की disputes handle करता है employees के zone enterprise zone developers के साथ, zone developer के zone अदर जोन को जोन डेवलपर्स के साथ, जोन एंटरप्राइजेस के आपस में, या अथॉरिटी और जोन एंटरप्राइज जोन डेवलपर के दरमियान. सो वी हैव मेड इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी डिस्प्यूट आता है वो इमीडिएटली स्पेशल एपेलेट ट्रिब्यूनल में रेफर हो. स्पेशल एपेलेट ट्रिब्यूनल में हमारे 3 टेक्निकल लोग होंगे, वन फ्रॉम लॉ, वन फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड वन फ्रॉम बिजनेस. And then they decide on technical basis and also call in for expert opinion globally as well to decide. Or once that is decided, it cannot be challenged in another district court or high court. It can be challenged in Supreme Court. So there is always a forum of Supreme Court to be there. But the core idea is कि जब कोई आए तो यहाँ पे stay orders 10,000 15,000 रुपए में ना ले, because investors want agility, investors want safety of their investment. And in Pakistan, due to our history in political instability and also security as well, थोड़ा सा investor जो है वो shy होता है. So if we
really want them to choose Pakistan instead of Dubai, or instead of Bangladesh, or instead of India, then this sort of creates that agile system for dispute resolution. What are the powers of the authority in terms of applicants or a licensee? बिल्कुल Can ठीक है. you So हाँ, so STZA is a very very powerful authority in terms of when it comes to regulatory function. So we license, and mainly जो हमारा license होता है उसके अंदर terms and conditions होते हैं. So for zone developer we have a different terms and conditions, and we have full power to issue license and cancel license. We can also issue penalties, we can also issue fines, but हमने वो बड़ी minimal रखे हैं. So for instance to promote startups, अभी हमारे तकरीबन 16,000 रुपए फी लाइसेंस की है स्टार्टअप्स की. वो भी which is हमारी actually कोशिश है very वो. nominal, which is या actually बट हम वो भी yeah. हटाने का अभी जो है वो इंटरनली ये डिस्कशंस चल रही है कि So we लेट्स can waive लेट्स the रेगुलेट. license fees for the startups or बिल्कुल ये बिल्कुल. power है authority के पास. So तो that's great. लाइसेंसिंग के अंदर जो भी चीजें हैं, द अथॉरिटी हैज फुल पावर टू अमेंड इट एंड आल्सो cancel it. However, there are a lot of protections for the investors. But just because Hamza thinks that he wants to cancel some license of the zone enterprise, that is not possible. और जो मेरे पिछले उसमें स्पेशल एपेलेट ट्रिब्यूनल आ जाता है. एंड स्पेशल एपेलेट ट्रिब्यूनल इज अ सुप्रा एंटिटी जो कि हमारे अथॉरिटी के बाहर है. So it's under the federal government, and it decides on क्योंकि we want to have a fair play with the investors. And जो भी companies बाहर से invest करती है, locally invest करती है, they take way more risk than ourselves. So STZA don't think of itself as a regulator; it thinks of itself as a facilitator. However, the rules of the game needs to be there, and once those are violated, then we definitely uh, want some sort of sanctions or penalties, and ताकि हमारी जो रेपुटेशनल डैमेज हो मुल्क की, या वो ये चीजें ना हो, या बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हर्ट ना करे कोई और इन्वेस्टर. सो दिस इज द ओवरऑल वो. बट पावर्स में वी हैव अ लॉट ऑफ पावर्स, एंड जो भी उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, द एक्ट इज वेरी क्लियर अबाउट दैट. Okay. With this हम investments की बात कर रहे थे, तो foreign companies के लिए do we have a certain different procedures, or do we have same rules and same regs for all the companies that are coming to us, all the investments they are coming to us? So even within the act and after the act, the rules, it is very clear that we treat local and foreign companies बिल्कुल एक तरह, and there is no discrimination in terms of that. In that, however, foreign companies, so for instance, अगर कोई pharmaceutical की R&D company है, तो वो टेक्नोलॉजी जोन में तो सेम रेगुलेशन है. हाउएवर जिस तरह ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, तो उसके साथ फिर उसने एप्लीकेशन फाइल करते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल रेगुलेटर, थोड़े से एक दो तीन, बट एसटीजीए इज वन विंडो also facilitates coordination for these investors with other regulators on a government to government level to fast track their processes, and also give them a world class experience in terms of coming to Pakistan. Thank you, Hamza. मेरा last question है आपसे. There are two types of evaluation for an applicant. One is technical and one is financial. So can you give us some details about that? बिल्कुल ठीक है. सो फॉर द जोन एंटरप्राइजेस वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल एवेलुएशन. इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एवेलुएशन वी लुक एट के जो 70-80 टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें ये है नहीं है जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं अथॉरिटी के, विच इज एफटीआई, जॉब क्रिएशन, आर&डी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, थिंग्स लाइक दीज. सो वो हिट कर रही है नहीं हिट कर रही हैं, क्योंकि हमने मुल्क का फायदा देखना है. तो जो है अगर तो वो है उनके बिजनेस प्लान में, then we issue license. We don't go into a lot of financial or evaluation, because and the idea is that a private technology company वो अपने profit and loss पे हमसे ज्यादा ही concerned है. So we don't need to sort of validate. And number two is technology is evolving so fast कि we can't judge what will work and what will not. For instance, Amazon पे 90s में लोग हंसते थे. Similarly, SpaceX और Tesla पे पूरी दुनिया कहती थी it will fail.
and these are $1 trillion companies, right? So we are very clear in terms of the technology business ke andar whatever they want to do, it comes under the purview of the technology sector. And the second, it resonates with the mandate of STZA जो हमें पार्लियामेंट ने दिया है. In terms of zone developer, थोड़ा सा हम वहाँ पे स्ट्रिक्ट है कंप्लाइंस में, बिकॉज जोन डेवलपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर है, Infrastructure. और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज ने आना है. तो फॉर इंस्टेंस जब एक जोन डेवलपर आता है, देन वी लुक एट देयर कैपेबिलिटी. सो फाइनेंशियल में हम उनके देखते हैं कि क्या उनकी बैलेंस शीट जो है उसमें सॉल्वेंसी के प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्या उनके पास एडिशनल इतनी इक्विटी है, या वो कोलैटरलाइज कर सकते हैं एसेट्स टू रेज फंड्स. सो वी लुक एट एज अ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पार्ट कि वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर फाइनेंशियल क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. उसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल ये है समीन, के कोई भी कंपनी आती है और वो कहती है मैं 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ, और जो है मैं 50 फ्लोर एक टावर बनाऊंगी स्टेट ऑफ द आर्ट. अब उस कंपनी से हमारा सवाल जो है वो ये होता है कि जी अच्छा, ये 10 अरब रुपए है, इस 10 अरब के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के आप किस तरह वो करते हैं. सो अगर तो वो बैलेंस शीट से कर रहा है या वो डायरेक्टर से कर रहा है, सो वी लुक एट द ओवरऑल फाइनेंशियल मसल एंड सी कि जी ये कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. बिकॉज व्हाट विल एक्चुअली हर्ट द टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इज कि वो लैंड ले ले और वो कल को 15 टावर के बाद बैंकरप्ट हो जाए और वो टावर फिर 15 साल ना कंप्लीट हो सके. So that's why we look at the zone developer more strictly. On the technical part, we look at 5C model, which is communication, collaboration, capital. We look at content. So ये 4-5 चीजों के फिर अंदर हमारे मेट्रिक्स होते हैं. सो फॉर इंस्टेंस जोन डेवलपर नीड्स टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी सेक्टर. सो उसके अंदर फिर हमारे मुख्तलिफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग हम अलाउ करते हैं. सो फॉर इंस्टेंस कल कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है और वो कहती है जी मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूंगी, तो उसमें वो थ्रू नहीं हो सकती, या रियल एस्टेट कंपनी थ्रू नहीं हो सकती. दे हैव टू पार्टनर विद अ टेक्नोलॉजी कंपनी कि वो बिजनेस प्लान बना सके, उसको पता हो कि भाई मैंने किस सेक्टर की कंपनीज लानी है, मैंने बिल्डिंग जो है वो किस रिक्वायरमेंट्स के लिए बनानी है, आया वो डेटा सेंटर होस्ट करेगी तो कंप्लीटली डिफरेंट वो होता है. सिमिलरली जोन डेवलपर में अगर कोई, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि टेक्निकली हम किस तरह चेक करते हैं. सो फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं मैं डेटा सेंटर होस्ट करूंगा, देन वी लुक एट कि भाई उस लोकेशन में पावर जो है उसकी रिडंडेंसी है या नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की रिडंडेंसी है या नहीं है. सो दीज आर वेरी टेक्निकल, आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स, बट आई एम श्योर वो मुझे कम्युनिकेट किया था आपने कि टाइम लिमिटेशन है. सो technically we look at these, and within our rules there are 4 annexures which talks about the evaluation, and also looking at के जो है क्या 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 डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्लान सबमिट करने की जरूरत है. सिमिलरली कुछ इस तरह की चीजें भी हैं कि उसके पास लैंड ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए, जोन की लोकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के करीब होनी चाहिए, या वहाँ पे मैन पावर होना चाहिए. सो थिंग्स लाइक दीज. But yeah, I'll be very open to कि because I look after strategic planning, तो जोन का रोल आउट जो है उसमें कौन से फैक्टर्स हैं, वो I'll be more than I happy to think we need explain. to have another episode for that. I hope so. Uh, yeah, I think it was a very long question. ये इसको हम फिर से एक और दफा भी cater कर सकते हैं. I think that's a one With question session. sorry. That's a one question session. How do you Exactly, evaluate zone developer? Yeah. exactly. And I think I'll take another time from you for this. अभी मैंने आपसे जितना time लिया है. Thank you so much for that, and thank you everyone for watching the episode. Any feedback for queries, please do write us on our email. It's going to come on the ticker, and we'll come up with another episode of In the Zone very soon. Thank you so much, Hamza. Thank you. Thank you, Sameer. It's always a Hafiz. pleasure. Allah Hafiz.